Hi, in today's video, we are going to be practicing a simple 10-minute to 15-minute routine that will help to improve your thyroid functioning. Now, this practice is not towards fixing any thyroid related disorder, but rather than to improve the overall functioning and harmonizing the functions of thyroid gland. आज का सेशन में हम 10 से 15 मिनट का एक छोटा सा योग अभ्यास करेंगे जिससे अपना थायराइड फंक्शनिंग ठीक होगा। उसके पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिफोर दैट डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन मैटर्स टू मी। Optimum thyroid functioning is essential for so many important aspects of our health, right from metabolism, bone health and much more. अब देखिए हमारा थायराइड ठीक से काम करता है तो हमारा शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक से होता है, हमारा हड्डी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और बहुत सारी अच्छा बेनिफिट्स हैं हमारा शरीर का। जब इस बैलेंस संतुलन बिगड़ जाते हैं फिर प्रॉब्लम है। व्हेन दिस बैलेंस और सेक्रेशन ऑफ थायराइड इज नॉट प्रॉपर देन देयर इज इश्यू इन द बॉडी। So in today's session, we'll be focusing on stimulating the entire thyroid region, the neck region. So if you have any neck related issue, cervical issue or high BP issue, because we'll be doing some inversions also, you follow the easy version that I will be showing you. अगर देखिए आज का सेशन में हम थोड़ा गर्दन को स्टिमुलेट करेंगे जहां आपका थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड्स है। अगर आपको सर्वाइकल इशू है या हाई बीपी इशू है, मैं आपको थोड़ा अल्टरनेट वर्जन दिखाऊंगा, उसको फॉलो करिए। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। Now first let's begin with tapping the throat region, the entire throat and neck region. From the back to the front, front to the back. Top from the top and slowly go down. Feel nice stimulation of the thyroid region. Do this for 1 to 2 minutes. Now very important to nicely stimulate and warm up the neck region because we'll be doing a lot of movements for the neck and the throat region. A little down towards the chest, collarbone. Make sure you don't have any nails. देखिए हाथ में nails नहीं होना चाहिए, नाखून को काट के रखिए। Relax, let go. Now let's do the neck rolls. Sit straight, breathe in, look up. Breathe out, look down. Swans अंदर ऊपर देखिए, swans बाहर नीचे. Up, down. Up, down. Up, down. Now look to your right, left, दाएं, बाएं. Now continue moving the head left and right. Do it very slowly. धीरे धीरे movements करना है गर्दन से. And come back to the center. Now drop your head to the right and left. Right, left, right, left, right, left. Now let's do the head rotation. Bring your chin down and slowly as you inhale start rotating your head in clockwise direction. From the right side you take your head up and as we exhale from the left side you come down. Keep rotating your head.
and reverse. Viparit Disham. Feel nice movement in the head region. Keep a smile, that's very important. And come back to the center. Now let's do gentle shoulder rolls. Front to back. कंधों को घुमाएं. And reverse. Again, see movement of shoulders also nicely massages the neck region. Now put the fingers on the shoulders, elbows to the front. Now inhale, take both your arms up, open up the chest. Exhale, bring your arms down. Continue. गोल गोल घुमाएं हाथों को. And reverse. And let go once again, pump your shoulders up down. Now let's do the cat cow movement. Marjarasan, Bithilasan movement करेंगे. Now come on all fours. Hip width distance between the knees and shoulder width distance between the palms. घुटनों के बीच में hip width distance रखिए, हाथों के बीच में shoulder width distance रखिए. Now do not move the body front and back. शरीर को आगे पीछे नहीं हिलाना है. Now as you inhale, look up. Push your chest and navel down and lift your tailbone up. Shoulders away from the ears. श्वास लेते लेते ऊपर देखिए और नाभि को नीचे दबाएं, कमर को ऊपर उठाएं. Exhale, श्वास छोड़िए, ठुड्डी को छाती के ऊपर रखिए और रीढ़ की हड्डी को ऊपर की तरफ लेके जाएं, पेट को अंदर कीजिए. As you breathe out, bring your chin towards your chest, arch your spine towards the sky. Squeeze your tummy. Inhale. Exhale. Continue. Feel the movement in your throat and neck region. Come back to the center. Now stay on your knees. Now if you have any issue with the knees, you can do this with the help of a chair. अगर घुटनों में इशू है, आप एक चेयर की मदद लेके इसको कर सकते हैं. Once again, come down. Now you may lie down on your back. आप पीठ की बल लेट जाएं. Now we will do the Sarvangasana. अभी हम सर्वांगासन करेंगे, shoulder stand. Now for those of you who cannot do the Sarvangasana, what you can do the simple Setu Bandhasana or the bridge pose. Especially people who have cervical issue, high BP issue should avoid the shoulder stand. So bend your knees, keep your hands next to the body. Your middle finger should be gently close to the heels, toes facing to the front. As you inhale, lift your hips up and roll your shoulders closer to each other. Exhale, stay here. श्वास लेते लेते कमर को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते छोड़ते विश्राम करिए. Keep breathing. And slowly and gently you may come down. धीरे धीरे नीचे आ जाएं. And stretch your legs out. Now for Sarvangasana, gently
roll your legs up, lift your hips up, hold your hips. Now first make your back straight. सर्वांगासन के लिए पहले पैर को, घुटनों को सिर की तरफ लेके आए और कमर के पीछे हाथ रखिए और बैक को सीधा करिए एंड स्लोली स्ट्रेटन द लेग्स अप. धीरे धीरे पैर को सीधा करिए. Feel the blood rush towards your face. Now if you have hyperthyroidism, definitely you should avoid this. अगर आपको hyperthyroidism है, इसको avoid करिए. And slowly bring your legs down without a jerk. धीरे धीरे पैर को नीचे लेके आए, आराम से लेके आए. Now we will do the fish pose. Now place your palms under your buttocks. Legs close to each other, elbows close to each other. Now inhale, lift your body up, open up your chest. श्वास लेते लेते पूरा शरीर को ऊपर उठाएं, छाती को खोलिए. Exhale, drop your head down. श्वास छोड़िए, सिर को नीचे छोड़िए. Breathe in, lift your head up and breathe out. Relax your body down. Now we'll do a counter pose, Pavan Muktasana. Bend your knees and wrap your arms around your legs. Pull your thighs into your tummy. Pavan Muktasana. जंघा को पेट की तरफ खींचिए. And lift your head up. Bring your nose in between the knees. If you can, अगर हो सकता है तो सिर को ऊपर उठाएं और नाक को दोनों घुटनों के बीच में लेके आए. And gently rock your body left and right and front and back. And let go, straighten the legs. And you may relax, let go of all your efforts. Stay in Shavasana for a while. थोड़ा समय आप शवासन में विश्राम कर सकते हैं. पूरा शरीर को ढीला छोड़िए, मन को ढीला छोड़िए, शरीर को स्थिर रखिए. And gently become aware of your body and roll over to your right side. धीरे धीरे दाएं तरफ करवट लीजिए. And you may sit up. आराम से बैठ जाएं. और आंखें खोल सकते हैं. You may open your eyes. Now let's do the Shankha Mudra. Now Shankha Mudra directs the prana more towards the throat region. This also helps to stimulate the Vishuddhi chakra or the throat chakra. अभी हम शंख मुद्रा करेंगे. इससे प्राण शक्ति पूरा अपना गले की तरफ आ जाएगा. कैसे? अपना बाएं अंगुष्ठा को दाएं हाथ से पकड़िए. Your left thumb is held by the right hand. All right.
and the right thumb touches gently in between the left index finger and the middle finger. और दाएं अंगूठा बाएं तर्जनी और मध्यमा के बीच में स्पर्श करना है. All right, and keep it in front of your throat. Close your eyes and we'll do 3 times Brahmari. ना गले के सामने रखिए, हम 3 बार भ्रामर आवाज करेंगे. आवाज, sound like the bee. Smile on your face, take a deep breath in. And relax your hands, close your eyes and just sit still for a few moments. हाथों को ढीला छोड़िए, विश्राम करिए और थोड़ा समय आराम से बैठे रहिए. Attention in the throat region. पूरा ध्यान गले पर रखिए. ओम शांति शांति शांति. And slowly and gently become aware of your body and surroundings and you may open your eyes. धीरे धीरे बड़ा सा मुस्कान के साथ आंखें खोल सकते हैं. How are you feeling? कैसे लग रहा है? Let me know in the comment section. Comment section में लिख के बताएं कैसे लगा आज का अभ्यास. Now this can be practiced as a standalone sequence or you can add it with your regular exercise or yoga routine. आप इसको अलग भी कर सकते हैं या अपना रेगुलर योगा रूटीन या व्यायाम के साथ जोड़ भी सकते हैं. And do share this video with your friends and family, whoever needs this. And do like this video and subscribe to this channel. और इस वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए. And I teach daily Shrish Yoga online on YouTube. You can join those classes and improve your overall health greatly. I have given the link for that also below in the description.